Namaskar, dear learners. How are you all? I hope you all are healthy and doing good with your studies. In today's English teaching session, I, Dr. Anup Kathat, LT English GHSS Kanbua Kalsi, Dehradun, welcome all of you with the topic we were discussing in our earlier video with the topic the 100 dresses part first. So, let's the topic begin again. We were discussing our topic, our lesson, the 100 dresses part first, written by Albazour Esther, the story of a schoolgirl Wanda who was living in America. She is from Poland. The area we are discussing here, we have about the author, thematic approach, introduction of the lesson, focus on reading skill, explanation with text, summarizing the lesson, vocabulary drill, and concluding key points. Let's a quick look on the author, about the author, Albazour Esther from Connecticut, USA. This is the birth date and death date. Some key points about the writer, America children author, children writer, her book Ginger Pie, winning award. 3 books were Newbery Honor winner. Esther had written 19 children book and 1 novel for adults. She also received the certificate of award of outstanding contribution to children literature. So this is all about the writer, the author, Albazour Esther. So let's revise the theme again, dear learners. The story is about a Polish girl who is studying and living with her parents in America. She always wears a faded blue dress. The teasing creates the change in her mental state, so she decides to leave the class and plays too. The story reflects a bitter message to convey all about discrimination and social isolation of migrants. Each and every member of the family deals with same problem of mocking and teasing. An easy fun can change anyone's life. The theme expressing all about mental trauma, mental state of bewilderment of any person who is living in the next culture, in the next country, leaving own country for the sake of a well settlement. But what happens after migration? All these things they have to face and encounter day to day. So all these activities, all these incidents, events happen with Wanda and with her family too. कहानी जो बताती है एक पीड़ा उन प्रवासियों की जो दूसरे देश में जाकर के बसते हैं, वहाँ के कल्चर को, संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, नेटिव जो लोग हैं, वहाँ के लोकल्स हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं इन लोगों का एक मजाक, एक फन बनाने का। कहानी कहती है ऐसी लड़की के बारे में जो कुछ सोच कर आई थी इस देश में कि मैं पढ़ूंगी, कुछ करूंगी, लेकिन उसके साथ क्या होता है ये सब हम इसमें पढ़ रहे हैं। So let's revise the introduction once again. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Her classmates often made fun of her with a name. She is from Poland and having different name in comparison of American children. उसका नाम American children से कुछ अलग है. Wanda comes from a poor family, गरीब परिवार से आती है, and she didn't have many friends. उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं. She was always quiet and used to sit as a last corner of the class. She always wore a faded blue dress. हमेशा
कॉर्नर में पीछे बैठा करती थी क्लास के, बिल्कुल शांत रहती थी, क्वाइट, और एक जो फेड ब्लू ड्रेस वो पहन करके आती थी अक्सर. दिस वाज द अपीयरेंस ऑफ वांडा. तो क्लासमेट्स आस्क्ड अबाउट इफ अदर ड्रेस शी है, तो क्लासमेट्स पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई और ड्रेस है या नहीं है. शी आंसर्ड 100, तो उसके मुंह से जो निकलता है 100 ड्रेसेस शी हैज. After her classmates often used to tease with asking same question again and again. और इसके बाद उसके जो classmates थे, especially Peggy, always asking about the dresses again and again. So this is about the introduction of the lesson that we are going through, the mental state of a girl child. She is facing that feel of discrimination. So the most important word you have to understand, discrimination, जिसे हम भेदभाव कहेंगे, इसे ध्यान में रखना है जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे. So this is basically the theme of the lesson, discrimination with the migrants. Now coming to the text, remaining text, first we will read it with proper stress, pronunciation, then after that we will explain the text. So connecting with the previous lines, as Peggy was asking Amanda about her dresses, about her shoes, 60 pair shoes. Now this lines connects to that line, cries of exaggerated politeness greeted this all alike. तो जब वो आंसर देती मेरे पास 60 पेयर्स हैं या 100 ड्रेसेस हैं, तो फिर पूछा जाता है कि सब एक जैसे हैं, जो जूते हैं, जो जोड़े हैं, एक जैसे सारे. She answered, वो क्या कहती है, जवाब देती है वांडा, oh no, every pair is different, all colors, all lined up. Peggy, who had thought of this game, and Mary, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that that was lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats bullies those who use their strength or power to frighten weaker people, incredulously showing unwillingness to believe, stolidly, and showing any feeling, and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embraced and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never
have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. But suppose Peggy and all the others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda. Perhaps she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. Today, even though they had been late to school, Mary was glad she had not had to make fun of Wanda. Her arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8. Let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy, to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with the new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran and her hand through her short blonde hair as though to push comfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. "You would look like a Christmas tree," the girls had said in pretended admiration. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses, and for boys, of designing motorboats. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. So the Peggy was asking all about her 60 pairs. All alike. She asked all alike. क्या सभी एक जैसे हैं? So Wanda answered, "Oh no, every pair is different." हर पेयर जोड़ा अलग है. All colors अलग अलग कलर्स में है. All lined up, सभी लाइन से है रखे हुए. Peggy, who had thought
up this game and Maddie, पैगी ने तो उसको गेम बना लिया था mocking fun of वांडा। उसकी जो फ्रेंड थी मैडी, जो उसकी इंसेपरेबल फ्रेंड थी, जो उससे कभी अलग नहीं होती थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वही दो होते थे जो आखिर में स्कूल से जाते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज। और ये सब पूछते हुए फिर वांडा भी वहां से चली जाती थी और उसकी जो डल आंखें वो दिखती थी और उसका हमेशा मुंह क्लोज बंद रहता था। शी डिड नॉट आंसर, she did not react. Hitching her left shoulders, अपने कंधों को उचकाते हुए every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. स्कूल को जाना या स्कूल से वापस घर जाना या आना हमेशा alone, अकेले वो अक्सर जाया करती थी। Peggy was not really cruel. Peggy इतनी भी निर्दयी नहीं थी, cruel नहीं थी। She protected small children from bullies. What is bullies? Dominant student, strong student who used to tease weaker student. तो ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चों को, छोटी क्लासेस के या जो कमजोर बच्चों को परेशान करते थे, बच्चे स्कूल में जो स्टूडेंट थे, they were called bullies. तो ऐसा नहीं था कि पैगी ऐसा करती थी, पैगी उन बच्चों को इन बुलीज से भी बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स, वो रोती भी थी। वाई, क्यों? इफ शी सॉ एन एनिमल, अगर उसने किसी जानवर को देख लिया उसके साथ मिसट्रीट, दुर्व्यवहार होते हुए, तो उसको पीड़ा होती थी। मीन शी इज काइंड एट हार्ट। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर कोई उससे कहता, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, अगर कोई उससे पूछता कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम क्रूअल हो रही हो, निर्दयी तुम्हारा जो व्यवहार दिखता है, ट्रीटमेंट वांडे के प्रति, क्या ये नहीं है? She would have been very surprised. तो ये सुनकर उसको सरप्राइज, आश्चर्य होता था कि क्या मैं क्रूअल हूं? Why did the girl say she had 100 dresses? तो फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं? Anybody could tell that was a lie. कोई भी कह सकता है कि ये झूठ है। Why did she want to? लेकिन वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? And she wasn't just an ordinary person. और वो ordinary person भी तो नहीं थी। Else why did she have a name like that? उसका ऐसा नाम भी क्यों था? Anyway, they never made her cry. लेकिन हमने कभी भी उसको रुलाया नहीं, उसको cry नहीं किया। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats bullies those used to their strength or power to frighten weaker people, incredulously showing unwillingness to believe, stolidly not showing any feeling, and how many this and that she had was bothering her. लेकिन उसका जो व्यवहार था बुलीस की तरह नहीं था, वो तो जस्ट एक फन कर रही थी, तो वो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसको दुख पहुंचाऊं, पीड़ा पहुंचाऊं। She was just making fun, poking fun. Maddie was poor herself. उसकी जो फ्रेंड थी मैडी, वो भी गरीब थी। She usually wore somebody's hand me down clothes. वो किसी की कपड़े पहनती थी, किसी और के। Thank goodness she didn't live up on boggin sides. लेकिन मैडी को लगता था कि थैंक गॉड मैं उस जगह में नहीं रहती हूँ जहाँ से वांडा आती है, बॉगिन साइड से, और हैव एनी फनी नेम, या उसका कोई फनी नेम होता। Sometimes, कभी कभार, when Peggy was asking Wanda those questions, जब उनसे क्वेश्चन पूछ रही होती है, in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in palm of her hand. मैडी को बुरा लगता था वांडा के लिए, क्योंकि बार बार जब पैगी पूछती थी और उसको बड़ा शर्म सा महसूस होता, बड़ा दुख लगता था, और अपने हाथ में वो रोलिंग स्टोन्स को जो है ऐसे घुमाती रहती थी और कुछ कहती नहीं थी पैगी को, कोई ऐसा मत करो, लेकिन उसको फील होता था, कह भी नहीं सकती थी, बिकॉज शी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। शी यूज्ड टू गिव हर ड्रेसेस, नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली। तो सॉरी महसूस नहीं प्रकट कर पाती थी कि मुझे बहुत दुख है वांडा के लिए। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। उसका ध्यान वांडा पर गया ही नहीं होता अगर पैगी ये गेम इन्वेंट या शुरू नहीं करते इस गेम को, जो ड्रेसेस वाला गेम है। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, शी वाजंट एज पुअर एज वांडा,
लेकिन मैडी जो थी वो इतनी पुअर भी नहीं थी जितनी कि वांडा थी। Perhaps, but she was poor. लेकिन वो भी गरीब थी, एक गरीब घर से थी। जो पैगी की फ्रेंड है वांडा, of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. इतना सेंस तो मैडी के अंदर था कि मैं कहने से पहले ये सोचूं कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है कि नहीं, क्योंकि वांडा ने एकदम से तुरंत रिएक्ट कर दिया था। Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Patons. लेकिन उसकी wish थी, उसकी इच्छा थी कि Peggy should stop teasing Wanda with all that fun. Today, even though they had been late to school, आज वो late हैं school के लिए, because Peggy always waited for Wanda to start some fun. Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. और मैडी को आज लग रहा था कि मैं ये वो सीन नहीं देखूंगी कि वो उसका मजाक उड़ा रही हो, बिकॉज उसको बहुत बुरा फील होता था। She was kind at heart. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. तो जब अपना अरिथमेटिक गणित का जब क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन वो absent-mindedly कर रहे थे क्योंकि दिमाग में सब वही चल रहा था। वो जो वांडा का सीन है, बार बार उसको दिमाग में वही आता था कि बेचारी को बार बार परेशान किया जा रहा है, कह कुछ नहीं सकती है। 8 times 8 ऐसा कुछ कैलकुलेशन कर रही है अरिथमेटिक का, और ये सब कहते हुए लेट्स सी। नाउ शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। अब उसकी इच्छा हुई कि वो पैगी को एक नोट लिखे, क्योंकि बोल तो सकती नहीं, शी कैन नॉट स्पीक बिकॉज शी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन पैगी। तो उसने लिखने का सोचा, मैं कुछ लिख करके उसको बताऊं कि तुम गलत कर रही हो, बिकॉज शी न्यू, वो जानती थी, शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक, कभी भी साहस करेज नहीं कर पाएगी कहने के राइट आउट टू पैगी, पैगी से टू से ये सब कहने का कि हे पैगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा, चलो उसको पूछना बंद करें हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज, उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट टू राइट अ नोट टू पैगी। जब उसने अरिथमेटिक का क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद कर दिया, देन शी स्टार्टेड टू राइट नोट टू पैगी रिगार्डिंग वांडा अबाउट टीजिंग ऑफ पैगी। सडनली शी पॉज, अचानक से रुकी, एंड शडर्ड, थोड़ा सा कपकपाई भी, रुकी कि मैं क्या लिखने जा रही हूँ। सो द फीलिंग्स इनसाइड मैडी इज ऑल अबाउट अ गुड फेवर फॉर मैडी। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress she had on, and Maddie. उसने अपने आप को पिक्चर्ड किया, अपने आप को इम्बाइब सोचा कभी स्कूल के यार्ड में, अगर पैगी ने मुझे टारगेट कर लिया, अगर मैंने उसको पूछा या स्टॉप करने के लिए कहा वांडा को टीज करना, तो पता चला कि मुझे पैगी कभी यार्ड में, स्कूल के आंगन में पूछ रही है। क्या पूछती है? पूछे पैगी माइट आस्क वेयर शी गॉट द ड्रेसेस, उसके पास जो ड्रेस है वो कहाँ से आई, दैट शी हैड ऑन, जो जिसने पहना हुआ है, एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस। मैडी को कहना पड़ेगा कि ये पैगी की ही पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। और उसको किसने ट्रिमिंग किया हुआ है, ठीक ठाक रिफिट किया हुआ है मैडी की मदर ने, ताकि रूम 13 में किसी को पता ना चले ये ड्रेस पैगी का है। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, ओ वेल, केवल पैगी ही कर सकती है अगर वही डिसाइड करे कि वो स्टॉप कर दे फन करना वांडा के साथ। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, जो उसके घुंघराले भूरे से जो बाल हैं उस पर उसने जब अपना हाथ फिराया, एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, कोशिश की कि मेरे मन से, मेरे सर से जो अनकंफर्टेबल थॉट्स बेचारी चले जाएं। What difference did it make? इससे क्या फर्क पड़ेगा? Slowly, Maddie tore into bits the note. उसने ये सब सोचते हुए उस नोट को, उस कागज के टुकड़े को बिट्स टुकड़ों में फाड़ दिया। She did not write. She could not muster up the courage. वो उस साहस को नहीं जुटा पाई लिखने का। She had started, उसने शुरू किया था। She was Peggy's best friend. वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। And Peggy was the best liked girl
in the whole room. और पैगी को सबसे ज्यादा उस रूम 13 में पसंद किया जाता था. पैगी could not possibly do anything that was really wrong. पैगी कुछ जानबूझ करके गलत नहीं कर सकती है. She thought, उसने ऐसा सोचा. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. Wanda उन गर्ल्स में से थी जो बॉगिन्स हाइट्स उस जगह में रहती थी जो थोड़ा मडी सा एरिया था, थोड़ा दूर था, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और अकेली ही वो स्कूल के आंगन में खड़ी रहती थी. She scarcely ever said anything to, कभी भी कुछ भी शायद उसने कभी किसी से बात की हो, कुछ कहा हो. The only time she talked was in school yard about her 100 dresses. बस वो टाइम था जब उसने रिएक्शन दिया था कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. मैडी remembered her telling about one of her dresses, और उसी दौरान मैडी को याद है कि उसने कुछ ड्रेसेस के बारे में बात की थी. पेल ब्लू, पीला सा, हल्का पीला सा नीला जो ड्रेस था, विद कलर ट्रिमिंग, जिसके कलर ट्रिमिंग्स थे एजेस पे. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल. एक और जो ड्रेस उसको याद आ रही थी कि ब्रिलियंट जंगल ग्रीन जो कलर होता है, विद रेड शेड, जिसपे रेड जो टच था ग्रीन के साथ. यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन. तो उसी दौरान एट द टाइम गर्ल्स सेड, उस गर्ल्स ने क्या कहा था कि तुम उस ड्रेस में क्या लगोगी, क्रिसमस ट्री लगोगी, बिकॉज ऑफ दैट कलर जंगल ग्रीन. थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses. For boys, of designing motorboats. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. तो वांडा के बारे में सोचते हुए, उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हैं जो सभी लाइन से लगे हुए हैं क्लोजेट में. मैडी began to wonder who was going to win the drawing. मैडी को थोड़ा सा आश्चर्य था और ये थोड़ा एक्साइटमेंट भी थी कि जो कॉन्टेस्ट अब होने जा रहा है स्कूल में, कलरिंग कॉन्टेस्ट, ड्राइंग कॉन्टेस्ट, गर्ल्स के लिए था ड्रेसेस डिजाइन करना और बॉयज के लिए मोटर बोट डिजाइन करना. प्रोबेबली, संभवतः पैगी वुड विन, और उसको लगता था कि पैगी ही इसको जीत जाएगी. जो गर्ल्स का मेडल है, पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. पैगी सबसे अच्छा ड्रॉ करती है, पिक्चर बनाती है. So dear learners, as we have gone through the text, we found that the thing of teasing is still going on in the mind of Peggy, and her friend Maddie wants to stop the teasing of Wanda. तो जो मैडी फ्रेंड है पैगी, वो चाहती है कि पैगी ऐसा करने से रुके, ऐसा ना करे, बिकॉज इसके बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं इन द माइंड ऑफ द गर्ल Wanda, because this can hurt her and this can change the mental state of Wanda. She can do anything. So the story, the lesson is continuing with the teasing of Peggy to an innocent girl, simple girl, Wanda Petonsky from Poland. Dear learners, we will discuss more in upcoming text. Till then, go through text. Take care. Thank you.